Yeah, so hi everyone. So we are live, so you guys can ask your queries. Like me and Himanshu will be answering all of your doubts, like technical, non-technical, gate doubts, placement related doubts, any doubts if you have, we guys will be answering. So yeah, you guys can ask your queries one by one. So I'll just quickly in the group chat that know that we're live. Anish, that thing, promo code Oh, wali. what's the whole? Yeah. So you guys would be knowing that already our course prices have been pretty low, and along with that, there is 10% off also currently running in, right? So that 10% off is also there. So you can apply the code till today. Okay. So this promo code will be applicable till today, till tonight. जैसे नया फीचर क्या है 1.2 का? क्या? देखो कमेंट सेक्शन में देखना 1.2 का कुछ नया फीचर आया है इसमें. पता नहीं है कुछ तो नया फीचर है. कुछ करते रहते हैं ये लोग. अच्छा, हाँ. ये लगता है कौन ज्यादा इंटरैक्टिव है उसके हिसाब से रैंकिंग करता है क्या? पता नहीं. क्या बता. Okay guys, yeah, you guys can start asking your query. Okay, we will answer each of them one by one. Yeah, hello everyone. Hello. Yeah, I hope you like whatever you're doing. Preparation is going well. You guys can let us know what is your progress and stuff. Is it going slow or like some kind of demotivation you guys are getting or anything? कौन सा सब्जेक्ट छोड़ सकते हो? अभी छोड़ने की बात मत करो, लेकिन छोड़ सकते हो तो कम्युनिकेशन छोड़ सकते हो, ठीक है ना? कम्युनिकेशन छोड़ सकते हो. क्या बोल रहे हो? सर टॉप स्कोर एंड I think Sai currently that they are not recruiting through that NPTEL course. Previously they were. Currently they have stopped. I think. I don't know. I'm not sure actually. Communication as of now it will come for free on YouTube. Okay, at least random variable random process I can promise you they will come for free on YouTube only. Okay, and rest like how much it would cost, the course price will be 1999, 1999. Okay, that would be the course price for one day. Rest of the things I will see. As of now I'm focusing on recording the part, so that we will see what could be the course price. Cadence Silicon Agent, Anish, what is this? Scared में समझा नहीं मतलब scared क्या है मैं समझा नहीं मतलब. Anything to get selected. He wanted to write anything to get selected. Selected और scared के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है. I have not heard about it actually. I don't know what that job role is. You can go through the JD job description. From there you can understand whether it is an analog profile or whatever, right? Rohit, just search analog VLSI roadmap. Himanshu Agarwal or Anish Shah, you will get a video. For revision, can I spend completely 2 or 3 days after service subject completion? You can spend. You can spend. If you feel boring, if you feel bored, you can start with another subject as well. In between, if you feel bored, right? Can I? Sir, this yeah, no problem. There is no problem to take a drop. I guess there is no problem. I think for PSUs they don't have any issues, right? Like Himanshu, if you are from PSU, then will you have to be final year to join the PSU, like for recruitment to gate score? Yeah, final year, yeah. Like if you are a dropper. No, dropper also can go into PSU, no? That is They can also get into PSU. Everyone can. Third year student can get into PSU. That's the thing. Ravi, your aim should be to give your best. You will attempt the examination, you will see the question paper and you will try to answer the question. That's it. Don't try to have any set rank or something. Just give your best. Admaya, from analog you can cover the RC circuit part and CMOS part you can cover. And which topic you should prioritize for digital there is nothing certain, but
For prioritizing, I would say you go with sequential circuits. Sequential circuits should be prioritized. Along with that, they will expect some question from muxes as well. CMOS part is also important, and if you want to cover anything from analog or network, then you can cover the RC circuit part. Okay. अरे Is मैं there समझ any गया। opportunity? Huh? ये अनिकेत क्या? वो कैडेंस सिलिकन एजेंट बोल रहा है, वो एआई एजेंट पूरा चिप एआई कर देगा, वो ये बोल रहा है। कैडेंस सिलिकन एजेंट मतलब वो चैट जीपीटी से एआई कर देगा वो पूरा। डर रहा है इसलिए बोल ऐसा रहा है कुछ कि शुड यू गेट स्केर्ड। हाँ पर मेरे को भी नहीं पता भाई, मेरे को भी नहीं पता, उसने वो बोल रहा है। पर एमएफटी में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो एक बार करो यार, यूट्यूब पे पूरा कोर्स करवाया हुआ है, पीएसपी यूट्यूब पे पूरा कोर्स करवाया हुआ है एमएफटी का, वहां से करो एक बार, ठीक है, नहीं आएगा दिक्कत। इज देयर एनी अंजलि अपॉर्चुनिटी यू कैन अंजलि। Is there any opportunity for 1 year experience analog circuit design? That we cannot tell here, right? We can't tell here. So please make playlist of analog. The way you are explaining was too good compared to edited videos. A complete playlist, like I did not teach IC design ever, okay? Because in IC design, like I myself, I'm not that comfortable. I know IC design, but I'm not that comfortable, so I cannot teach IC design, and neither do I have the time as well. So analog circuits I have taught, which you can study, but analog IC design you can study from Nagendra sir. Okay, from Nagendra Krishnapura sir, you can study analog IC design. What is more than sufficient to get this? Everything have been already told. All the roadmap videos are already there. What you need to prepare, all these things are already there. Sir, I'm preparing for placement aptitude. Should I watch your gate aptitude series? Yeah, it will be sufficient. To Dranch, it will be sufficient. Okay, it will be Also sufficient. if you can solve few easy cat level questions, cat PYQs, easy cat PYQs। मैं तो स्टार्ट किया है तो सही। आप चेतन सही से पढ़ा नहीं है ना मैथ्स, तो फिर से दोबारा सही से पढ़ो। मतलब अगर पीवाईक्यूज नहीं हो रहे तो इसका मतलब, क्योंकि मैथ्स के पीवाईक्यू उतने भी डिफिकल्ट नहीं आते, इजी आते हैं। Yeah, Nanda dead. There is nothing called luck in competitive examination. Okay, in competitive examination there is nothing called luck. It's just a way to escape from the reality. People just use it as a escape, that just to satisfy their ego, that yeah, we did not do something good, but now we need to satisfy our ego, so I will say that it was based on luck, but nothing is based on luck. Nothing. No, I think he meant in 200 days. Look, you have to give your best. You cannot think of any rank right now. Just give your best. If you are starting from zero, you just whatever you start from zero and give your best. That's it. Yeah. And if you see negativity, like even if you start from January, people will say, why are you starting from January? There is enough time left. Then you start from March, people say enough time left. Then you start from July, okay, you are starting late. No time is left. If you keep on listening to people, then nothing will work. Okay. Yeah, So can I just study? focus on studying. That's it. Yes, Hazard, you can study that at the last, but make sure you finish the aptitude because your placement seasons are coming, right? Say to Verilog is important. Okay, Aryan, Verilog is important. COA you can skip. Verilog is important. Decent marks. Yes. Yeah, Adarsh, yeah, thank you for that. Not Tarun, not specifically there. You will get to automatically get the opportunity to learn because they will be using their own tool. You will not have the hands-on access. But if you can learn a bit of MATLAB, you can learn a bit of MATLAB, right? Basic things, whichever open source you can learn. या आशुतोष, एक चूज करना है तो ईडीसी करो, ठीक है ना। ईडीसी छोटा भी है, उससे सवाल भी आता है हर बार, तो ईडीसी चूज करो, ठीक है ना। एक चूज करना है तो एमएफटी कम्युनिकेशन ईडीसी में से एक चूज करना है तो ईडीसी करना। Yeah, virus, you should just start preparing. So you can watch the video. Like just recently I uploaded a video for electrical aspirants, last 200 days strategy. You can follow that strategy, okay? And just follow the sequence of subjects. It's not like you have to finish within the time slot. Just follow the sequence and whatever the flow I have explained. Okay, just watch that video. Yeah, Hajad, you can study number system in the last, but number system is actually important topic. Like if you don't study number system, you will not be able to solve the problems of number system. Like if you don't study percentage, you might be able to solve the problem. If you don't study sequence series, you might be able to solve the problems. But if you don't study number system, you will not be able to solve the problem. You will not be able to tell that how many number of zeros will be there at the end of 120 factorial, right? You have to study that. That's the bottom line. So you cannot drop number system. You can study anything. पीएनसी किसके अंदर आता है? नंबर सिस्टम के अंदर। मतलब ऐसे तो सेपरेटली पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन नंबर सिस्टम में भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना वो वाले। अब वो मैं पीएनसी में नहीं बताता ना, 120 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे, वो सब चीजें मैं नंबर सिस्टम में बताता हूँ। वो तो नंबर सिस्टम में बताना चाहिए,
वो तो नंबर सिस्टम वही तो बताना चाहिए ना। वो वही थोड़ा सा वही डिफरेंस आ जाता है पीएनसी का। पीएनसी मतलब पूरा दिमाग वाली चीज है ना, वो इंजीनियरिंग है। नंबर सिस्टम में अब मेथड याद रखनी पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। For internship you can drop, Aryan Kumar. For internship you can drop it. Fourth year student giving GATE in 2026. I am starting my prep now, but I have scored decent marks in my subject in my previous year, so that subject are not all new. Should I be helpful that it's possible? Yeah, you should be hopeful. Surely it is possible. Getting under 500 is surely possible. Just give your level best. That's it. Just give your level best. कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन आएगा नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट वीक से कम्युनिकेशन के वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। Yeah, Komi, yeah. Thank you for आशुतोष का कमेंट पढ़ा है तूने? Hmm? ईडीसी वाला कमेंट, आशुतोष का ईडीसी वाला कमेंट। नहीं यार, मेरे सामने तो आया ही नहीं कोई। 8:59 पीएम पे, 8:59 पीएम से। ईडीसी मेरा लास्ट में आएगा यार थोड़ा सा। नहीं, उनका अच्छा है भाई ईडीसी। मैं खुद बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उनका ईडीसी EDC उनका अच्छा है, इनकी ठीक है ईडीसी ना, उनका बढ़िया सही होता है। है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आराम से पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब बढ़िया है। ठीक है, मैं खुद रिकमेंड कर देता हूँ, बढ़िया उनका ईडीसी। बट वो ईगो वाली बात आ जाती है यार कि चलो बात नहीं करते उनके बारे में। उनका सब्जेक्ट बढ़िया है यार, टीचर सारे मेहनत करते हैं, ठीक है। बट कुछ टीचर का मतलब टेम्परामेंट अच्छा होता है, कुछ टीचर्स का मतलब टेम्परामेंट। बिहेवियर थोड़ा सा वेट हो जाता है, थोड़ा सा बिहेवियर की बात होती है सारी यार, देखो सारी बात बिहेवियर की है। बीजेटी छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते यार, मत छोड़ो। डीसी में बीजेटी मत छोड़ो, क्योंकि आईआईटी वालों को पता है ना कि आप छोड़ रहे हो बीजेटी, तो इसलिए वो सवाल डाल देते हैं, तो इसलिए मत छोड़ो, ठीक है ना। छोड़ना नहीं है कोई भी Yes. टॉपिक। Case of, हाँ, I have heard they ask bit of Verilog questions as well. If you have a project, or if you have bit of expertise in Verilog, so that will be easy level. I don't think that will be very difficult. That will be easy level. You can have a look standard Verilog interview questions, right? यूनिट टेस्ट सीरीज अपना ऑलरेडी अवेलेबल है, लॉन्च है फ्यूजन टेस्ट सीरीज, आप परचेज कर सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है फ्यूजन 10, यू कैन अप्लाई दैट, गेट 10% ऑफ। या वायरस रजा, तो plan of action would be like I have made a video of 200 days, you can watch that video, there I have given plan of action, okay। नहीं, बोल दिया मैंने उसको, 200, मैंने वो डबल का है, आई हैव टोल्ड हिम फॉर डबल यू कैन वॉच माय वीडियो, बोल दिया। yeah, okay Rohit, yeah, it's necessary to go into deeper of the topic, no matter whatever that you are preparing for। तरुण, देखो इसके बारे में तो आइडिया नहीं है यार, ये किसी और से सीनियर से पूछो, इसके बारे में तो आइडिया नहीं है। व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट्स? देखो Adamya, if you are preparing for analog roles, project is not that important. For digital, you can do some basic Verilog projects, right? Vijay, I would not recommend IIST Shipur, okay Vijay, I would not recommend IIST Shipur from my side. Rest it's your decision, but I would not recommend it. Aniruddha, already these videos are there. Just search analog VLSI roadmap, right? Himanshu Agarwal, Anisha, any video you go watch, these videos are there already. Anish, did you answer Keshwa's query? Like he कर दिया। Okay. Any suggestion before going to the analog VLSI domain in IITM? So this video also I already made. There I have discussed in detail that what you can do before getting into masters. Okay. So what to do before getting into masters? Prep fusion. You type that, you will get a video, and everything I have told. Okay. Every single thing I have told, that what all things you can study. Khaiti, can you just repeat your query? I'm not able to understand exactly what do you mean. हाँ तो तुम पर सही बोल रहे हैं टीचर, तो देखो छोड़ना नहीं होता ना, लेकिन आप हाँ कह रहे हो तो कि मेरे वही को तो, छोड़ना है। हाँ तो आप अब कह रहे हो तुम छोड़ना है, तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि सजेस्ट कर रहा हूँ कि छोड़ दो ईडीसी कम्युनिकेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छोड़ रहे हो तो फिर छोड़ दो ना, छोड़ना तो रिकमेंड नहीं होता, ठीक है। यूट्यूब में पूरा कम्युनिकेशन नहीं आएगा आशीम, ठीक है, पूरा कम्युनिकेशन यूट्यूब में नहीं आएगा। You have covered the CMOS part, but you did not cover MOSFET. It is not possible, right? It is not possible. You cannot cover CMOS before studying MOSFET.
You might have covered that power dissipation part. That is different part. That is the digital VLSI part. If you I are talking think about I analog think VLSI, he's digital wheels only is talking about. I think. okay. So yeah, yeah. All the best. Try to follow the plan. How can I prepare EC it? Jashwant Ritik, there is a IIT. Yeah, Anish. now I'm at defense. It has changed 7 years. So join. Okay. It's not late. 2027 is no. What? It has a 10 year or 7 year. I don't think it's late because you have just joined the PSC, right? It's been 8 months you're talking about, or 7 years, 8 months. Pranay Verma Pranay, it ने won't क्या? be. No, it won't be a problem. It won't be a problem. Anish, will you? Sidhu, just yeah, search a video. I have made a video for analog electronics, how to prepare analog digital for double aspirant. Just search this video, perfusion. You'll get this video. Watch that. हाँ यार देखो, कॉम्बी फ्लैम ये अगर 11 मंथ की इंटर्नशिप के बाद पीपीओ नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है यार। ठीक है ना, होती है दिक्कत। ठीक है, घर वापसी तो नहीं, आप ऑफ कैंपस वगैरह कुछ ना कुछ जुगाड़ लोगे, लेकिन दिक्कत हो जाती है। बॉटम लाइन ये है। Just study, Ritik. Just by studying, you can prepare for EC gate. That's the bottom line, nothing else. Just if you study for EC gate, then you will be prepared for EC gate. Just search roadmap video is there for Gate EC. You can start studying from that. Vijay, I think you have to take a drop. If you can, if it's possible, you can take a drop. Should one. How many subjects? At least 3 to 4 Four, subjects, right? four. Four Yeah. subjects. At least 4 subjects. If you are preparing from like March onwards, or if you are preparing from Feb or March onwards, 4 subjects should have been prepared. I don't think Prep Fusion is helpful, but English language courses are available. Prep Fusion is helpful, I don't know, but English language courses are surely available. Okay. And what is that emoji like this? Head को ऐसे इसका मतलब क्या है? हेल्पफुल नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई नहीं। सर टीआई आने तक एनालॉग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो गेट ग्रेजुएशन के। हाँ ठीक है यार, यही सबका सजेशन रहता है, हम लोगों ने भी यही किया था। ठीक है, हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर गेट की तैयारी। मैंने तो गेट की तैयारी की थी। फॉर डीएसपी के लिए कौन सी बुक? यार आई नीड टू सी, आई नेवर स्टडीड डीएसपी, आई हैव स्टडीड सिग्नल सिस्टम ओनली, not DSP. For signal system, you can refer OpenM, but for DSP, for specifically DSP, I will see. Okay. देखो Tarun, there is already a video marathon, RC marathon. Anisha uses search whatever possible. RC, RL, current source, voltage source, everything has been covered. Like search मारो यार, कभी search तो करो. NIT case, Jashwant I just said, NIT Suratkal VLSI. Okay, go for it. यार गेट 40 देखो, गेट 40 कोड पे जो जितने पे प्राइस पे मिल रहा था ना कोर्स, उससे कम प्राइस का हो गया अभी। सो वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड द प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड। ओके, सो कम पे मिल रहा है, और ये कोड आज के लिए है, डिस्काउंट आज के लिए, इसके बाद 10% को चला जाएगा। तो नहीं मॉस फिजिक्स वो अलग है, वो ईडीसी का अलग से पढ़ना थोड़ा सा, पड़ेगा। मतलब ईडीसी में फेट पढ़ना तो पड़ेगा, ये कैप भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मोस्ट कैप पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट फेट भी पढ़ना पड़ेगा। फेट में वो एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह वो सब भी आएगा। तो ईडीसी वाला मोस्ट फेट में अलग लेवल पे अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। एनालॉग में जो पढ़ाता हूँ वो उसका फीलिंग अलग हो जाता है थोड़ा सा। मैं बार बार जीएम पे फोकस करता हूँ। जब भी मैं मोस्ट फिजिक्स पढ़ा था तो आप देख रहे होगे कि मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था जीएम पे, तो वही बात है। लेकिन ईडीसी में मैं जीएम वगैरह पे फोकस नहीं करूंगा। तो एक चीज सर्किट एनालिसिस होती है, एक डिवाइसेस होता है, तो दोनों को अलग लेवल पे पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे पढ़ना होगा ईडीसी में। Titans batch, you can purchase Titans batch. If you want to have the guidance, you can purchase the Titans one, or you can purchase the Pathfinders if you don't need the guidance. But I will prefer, if you are preparing for 2027, you take the Titans batch. यार स्वैग रडार का आइडिया नहीं है यार, आप ग्रुप में पूछ लो, किसी को तो होगा पक्का। ठीक है ना, रडार मेरे बीटेक में भी नहीं था, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है वो सब्जेक्ट ही। ठीक, बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है, तो आप ग्रुप में पूछ लो एक बार, रडार के लिए कुछ कोई बता देगा।
Vara Prasad, right now is the best time to start preparing. Right now, is in preparation. Naveen, scripting language is not important. Scripting language is not important for analog domain. स्वैग बताया ना, रडार का आइडिया नहीं है यार, बताया ना, रडार का कोई आइडिया नहीं है। रडार के लिए आप ग्रुप में पूछ लो। सर बीटेक में कितना सीजीपीए मेंटेन करेगी, एमटेक प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 7 मिनिमम। आईआईटी दिल्ली आईसीएस बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है, इसमें क्या ही है। आईईसी, सॉरी नॉट आईसीएस, आईईसी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। Embedded, Somil, there is a video just says embedded roadmap. Anisha, you will get a video. Okay. So qualify. हाँ Jatin, you can try for other exams as well, because GATE those exams will be subset, right? You can try for other exams. Communication will start from next Thursday onwards. Okay, communication is starting from next Thursday onwards. Okay, okay guys. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई में क्या डिफरेंस? देखो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का करिकुलम देखोगे ना, तो बहुत सारे कॉलेज में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किटल सब्जेक्ट्स भी, मतलब सॉरी डिवाइसेस भी काफी बढ़िया डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं। मतलब वो लोग मॉसफेट वगैरह को, मतलब डिवाइस फिजिक्स को, फिनफेट वगैरह को भी, उनकी जो डिवाइस फिजिक्स है उसको भी बढ़ाएंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। बट वीएलएसआई में प्योरली होता है कि एनालॉग डिजिटल की सर्किट्स पे फोकस करते हैं वो, ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है। बाकी आप करिकुलम देख लो, बहुत सारे कॉलेज में नाम होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, बट वो पढ़ाते वीएलएसआई ही है। और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और एनआईटी के क्या है, तो मैं तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद कहूंगा, ठीक है। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन इज नाउ। वरा प्रसाद बोल दिया वो तो बोल दिया या बोल दिया which test series, Sharma, you can take 1 hour our preparation test series, and another one, anyone you take, ACE or MEDC, you can take. Okay. 4 core subjects in 3 months are possible, but you need to be dedicated enough. If you are studying 8 hours per day, then 4 core subjects you can do within 3 months. 4 core subjects in 3 months you can surely do. Gupta, what guide you need? You just need to start studying, right? That's it. Whatever companies come, you just understand what subjects they ask and you start studying those subjects, right? Yeah, Anirudh, yeah, great. Which college are you from? Like finally people are realizing now. क्या रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही मतलब कमेंट था। Sir, how many are there? How many subject? हाँ, आशुतोष लेटेस्ट है डिजिटल का सब्जेक्ट ले सकते हो। Thunderbolt, there is a video, 200 days roadmap of EC or W, whichever branch you are from. Just watch that and follow the subject sequence according to that, right? I think you'll be able to cover up. GATE CSE. नहीं, CGP उतना मैटर नहीं करता, 7+ रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप GATE CSE के हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पहले बताओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ। यार देखो, कम्युनिकेशन का मैं पहले नहीं बता सकता यार, मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो 100 से 150 तो हो सकता है, 100 से 150, राइट? वो आराम से 100+ तो आराम से है, बहुत 100 प्लस तो होगा ही। हाँ, 100 से 150 हो सकता है। Anish, your voice is coming too loud, I guess. अच्छा, लाउडर है। कभी कम आता है, कभी ज्यादा लाउड हो जाता है। बेसिक्स ऑफ सिग्नल आता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ सकता हूँ क्या? देखो यार, आप रैंडम वेरिएबल तक तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। रैंडम प्रोसेस में सिग्नल सिस्टम कहीं ना कहीं मैं यूज लूंगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट कर लो पहले यार, आप जितना हो सके फूरियर ट्रांसफॉर्म तो कंप्लीट करने का ट्राई करो, और मैथ्स का वो इंटीग्रल कैलकुलस तो कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन कर देना स्टार्ट। लेकिन वो जो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगा वो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन खुद से करके आओगे पहले बेसिक्स ऑफ सिग्नल, तो बढ़िया रहेगा। मतलब बेसिक्स ऑफ सिग्नल कर लो, फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट यूज होगा बेसिकली, बॉटम लाइन ये है। लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली तो नहीं पढ़ सकते ना आप, पहले आपको फूरियर सीरीज पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले आपको सिस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ा देख लो पहले आप, फिर आगे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना। और वो पूरे दिन रहेगा ही कम्युनिकेशन, मतलब प्राइवेट नहीं होगा। जितना मैं यूट्यूब पे लाऊंगा वो यूट्यूब पे रहेगा। अभी से यारी आवाज? हाँ, अभी से यारी है। और 200% हो गया था फॉर सम रीजन, 200% हो गया था वॉल्यूम। अच्छा, हाँ, थंडरबोल्ट यू कैन वॉच अ वीडियो, 200 days roadmap. Anisha, right? Double E for GATE double E. Follow that roadmap. Okay, 200 days GATE roadmap. RPYQ is enough for 5-6 subjects for EC except communication for 2026. PYQs are enough, yeah, PYQs are enough.
बोल दिया How much तुमने EDC you फिर। should focus for TI? No need to focus on EDC. Okay, no need to focus on EDC. No one asks EDC in any circuit design interview. DTU signal processing and digital design, is it similar to digital VLSI? गुप्ता बता क्या बोल Yeah, रहा Anish, you were saying something. है? Okay, I will say. I will say. Yeah. हाँ, So I need to see the curriculum, Rishabh Yadav. I don't know. I don't have much idea. I need to see the curriculum. In DTU, number of companies visiting the campus would be pretty good. Okay, number of companies would be pretty good. Gupta, like you can see the curriculum there. Okay, of course, nothing is enough, right? You can see the curriculum. If those things are getting asked in your company's company interviews, right, and OS written test, you can take the course. Curriculum is there, everything is there present. If you go into the details, right, everything is mentioned. अभी फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है, आपका 35 मार्क्स आया था ईसी में. Yeah, surely it is possible. 35 marks was decent enough. I would not say it is too good, but it was decent enough. From 35 to try getting 60 marks this year. Surely you have enough window. Naguri, it will be helpful, but it is not gate specific. It is placement oriented, right? So if you want to prepare for gate, you take the gate course. अरे 200 आवर्स नहीं जाएगा यार, 150 से कम रहेगा, ये मैं बता देता हूँ. ठीक है, कम्युनिकेशन विल बी लेसर देन 150 आवर्स, दैट आई कैन surely tell. But if you guys have already seen my previous videos, you would know, no, like how much, even if I'm integrating x.dx, I will tell you the step there, that how to integrate x.dx, x square by 2 from 1 to 2. So all these things are there. So it will not take much time. Like if the content is of 150 hours, then you would be able to cover it in 200 hours. That's the thing. Okay, so फिर it भी will be नहीं कर lesser than. पाते यार, फिर भी नहीं कर पाते, टाइम लगता है, फिर भी टाइम लग जाता है. प्लेसमेंट प्रिपरेशन. Yeah, Somajit, I told, no, I'm not having much idea about DSP. This is what I have already told. Please listen to the session carefully. If you are asking a query, your query has been already answered. DSP book, I don't have much idea. For signal system, you can follow OpenM, but for DSP, digital signal processing, DSP is actually the next type of signal system. Once you study signal system, after that DSP comes into action. Okay, so for DSP, I don't have much idea. This I have already told. NPTEL Uma, control system select. you are from Yeah. electrical or EC? You're from electrical or EC, Uma? 90 Surat VLSI. SSA, yeah, you can start. You can start. Sir, for a drop year student, which subject can I take light? I mean, which one should be last for preparation? EC. Like, EC बोल रहा है, communication कर सकता है, या but you cannot take it lightly. Okay, you can put it in the last. Only subject you can take lightly is aptitude. General aptitude is the only subject which you can take lightly. भाई उसको लाइटली लेगा, फिर उसका वो 15 नंबर चला जाएगा यार. हाँ, 15 नंबर चला जाता है. कुछ नहीं आता 15 नंबर. Yeah, SSA you can start. You can start the preparation from first semester. बोल दिया. Story busy time. 30 this time I'm using instrumentation control. Can I do masters in VLSI? Yes, you can. Yes, you can. एनालॉग कम्युनिकेशन बड़ा है ना शायद, या डिजिटल कॉम बड़ा है? कौन सा बड़ा है? डिजिकॉम बड़ा है. Sir, can you suggest a good playlist for analog IC design by Nagendra Krishnapura sir? Okay, by Nagendra Krishnapura sir, analog IC design by Nagendra Krishnapura sir. So there is no other playlist available actually. Or like in Shanti Pawan sir playlist, you can get something good, but that is mainly focused on analog circuits only. For analog circuit design, for IC design, there is only one playlist, that is by Nagendra Krishnapura sir. Okay. Kshitish, three chapters are important: computer architecture, pipelining, instruction pipelining, and cache memory. These three topics are important for CA. Okay. Yeah, you can start from YT playlist. You can start from YT playlist. Should we choose EC or electronics and VLSI engineering and for BTech? I got to know that VLSI branch syllabus is better than EC for VLSI. I think you can take EC. I feel you should take EC. बीटेक for बीटेक कुछ खोला होगा उन्होंने. अब जैसे बीटेक में भी पता खोला होगा, मतलब एआई भी तो बीटेक में आ जा रहा है ना बहुत कॉलेज में, तो पहले से भी खोल लिए होंगे लोग. बट आई विल ऑलवेज टेल यू टू गो विद द प्रेफर्ड ब्रांच EC, राइट? क्या पता आपको EC पढ़ना ही ना हो ना.
ये भी तो हो सकता है ना, आप अभी 12th क्लास पास किए हो तो हो सकता है कि आपको इसी फ्यूचर में ना पढ़ना हो, तो गो फॉर, डोंट गो गेट इनटू वीएलएसआई डायरेक्टली, ओके, गो फॉर ईसी। देखो निकिता ऑलरेडी क्लियर कर दिया ना, 7+ सीजीपीए रखो तो क्लियर हो जाता है। कुछ कुछ कंपनीज में अलाउड नहीं होता, बट एमटेक मास्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, कोई बीटेक सीजीपीए देखेगा नहीं। 7 सीजीपीए मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उतना तो रखना पड़ेगा, हाँ, उससे ज्यादा आप उतना रखना 7.5 पड़ेगा। रखो, 8 रखो, वो 7 तो रखो आप एटलीस्ट, ठीक है ना। Till when companies come? I think till August end or अगस्त September. सितंबर, हाँ, सौरभ कुमार टिल अगस्त सितंबर यू फोकस ऑन प्लेसमेंट्स, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर गेट। ट्रिपल आईटी दिल्ली विदाउट एनी डाउट, ट्रिपल आईटी दिल्ली, गौरव गौरव M, पवार, आईटी दिल्ली, या yeah, Yuvraj, MTech in VLSI, it won't matter. Your gap year won't matter for masters in VLSI. It won't matter. विशाल राजेश यार, look bro, this should not be a query, no. If you are preparing for analog domain, then you would know computer architecture for analog domain. Like, this should not be a query. You are having the exam on 24 July. It's been only 12 days left. So this should not be there. Okay, this query should not be there. Prashant, if you want to ask any technical doubt, you can send in the Telegram group. I will answer there. Okay, for technical doubt, make the circuit and send me there. I will answer. Time is not a subtopic. Yeah, Sanchit, you can prepare for gate EC. You can prepare. Okay, digital domain TI intent. Digital domain में उसका अच्छा. Not that important. Vishal, not that important. Although I don't know actually, you can see your P Vicus, but first digital is most important. Then I think Verilog is important. That's it. I don't have the idea about computer organization. देखो But यार, if you ask me, if I बोलते yeah, important topics, if you ask me, you can do the computer architecture, you can do the instruction pipelining and cache memory. These three are the important topics. क्या चिरंतन आईआईटी पलक्कड़ वीएलएसआई के लिए एक ठीक कॉलेज है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब न्यू आईआईटीज में अगर आप देखोगे ना, तो जैसे भिलाई वगैरह से कंपेयर करो तो आईआईटी पलक्कड़ एक ठीक कॉलेज है। अब मेरे को ये पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में नहीं पता, एसओसीडी, अब देखो ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारी ब्रांचेज है, तो मेरे को सबके बारे में तो पता नहीं होगा, लेकिन आईआईटी पलक्कड़ के स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, ठीक होते हैं, मतलब बढ़िया होते हैं, उनको उनके पास मतलब बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी किए होते हैं उन्होंने। तो पलक्कड़ एक वीएलएसआई के लिए एक ठीक कॉलेज है, इतना मैं बता सकता हूँ बस, और तो बाकी पर्टिकुलर ब्रांच का तो मैं नहीं बता सकता। Digital electronics and Verilog enough for service based VLSI company? Enough, there is nothing called enough, but like Verilog, digital electronics, CMOS, HTA, these parts should be covered. Yeah, for analog circuits you can watch Nagendra Krishnapura sir. Okay, Nagendra Krishnapura sir video you can watch for analog circuits. VTech second year, should I do VLSI or get preparation? Anything you can do, both you can prepare parallelly. Okay, any roadmap you search, whatever the query that you have written here, the same query you write down in the YouTube search section, that how to prepare for gate and VLSI together and all these kind of things you type, you will get a video. Okay, no doubt about Yes. that. After that perfusion you type, automatically our videos will come up. BS electronic systems online program. Look, honestly speaking, I will not prefer online program. Okay, at least for bachelors. Not worth it. No. Bottom line is not worth it. Bottom line, one line, not worth it. Okay. डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, हाँ। डायरेक्ट बोल यार कुछ नहीं है, मैंने देखा उसके बारे में, उस पूरे प्रोग्राम के बारे में देखा, कुछ भी नहीं है उसमें। वो भाई अब क्या बताएं। नहीं, वो अपने वो भी कर रहे हैं ना, क्या नाम है उनका, कुछ लोग और भी लोग आ रहे हैं जो कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं, नए लोग। एक तो कौन नया आया कॉलेज ओपन करने वाला? नहीं, 2 लोग ही हैं, तो एक तो वो है और एक गेट रेडी विद मी, एक तो गेट रेडी विद मी, और एक सीरियस, वो सीरियस है, पता नहीं वो क्या, सुपर 30 वो तो है, ठीक है, वो वाले। हाँ, वो अरे तो भाई यार, कर रहे हैं वो। उनका नाम क्या था, मैं भूल गया, सुपर 30 वाले सर का। हरकिरत भैया। हाँ यार, किरत भैया से यार अब कहाँ पे कंपेयर करेंगे यार, उनको उनसे अपने इंस्पिरेशन लेते थे लास्ट ईयर तक अब नहीं लेते, लास्ट ईयर तक तो उनसे इंस्पायर होते थे यार। नहीं, अभी भी कर रहे हैं सही, ऐसा पता नहीं क्या, लेकिन यार उल्टी सीधी कुछ वीडियो आती है यार उनकी, मैं देखता हूँ आजकल, पहले अच्छा, बहुत बढ़िया आती थी यार,
अभी हाँ अच्छा कुछ भी डाल दें। अच्छा, मैं देख अभी फॉलो नहीं करता, मैं भी इसीलिए फॉलो नहीं करता सर यूट्यूब पे। हाँ, नेक्स्ट वीक से आएगा कम्युनिकेशन, शायद नेक्स्ट वीक से कम्युनिकेशन आएगा। आरसी सर्किट्स का प्लेलिस्ट थोड़ा सा सीक्वेंस में कर दो। मेरा बात बोल रहे हो या कौन सा बोल रहे हो? पूरा सीक्वेंस में तो है मैराथन पूरा सारे ऐसे करके, और क्या मतलब, और क्या चाहिए आपको? सारा सीक्वेंस में है यार, सारा सीक्वेंस में है। बाकी आपको मतलब एकदम जीरो से पढ़ना है ना, मतलब एकदम जीरो से कि मतलब सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो, तो फिर नेटवर्क एनालिसिस की प्लेलिस्ट देखो। हाँ, ठीक है, वो आरसी फ्यूजन सर्किट वाली जो नेटवर्क। प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, उसको ऐसे बनाया कि मतलब जिसको पहले से आता है उसको और बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो बस उसके लिए वो बनाया वो, ठीक है प्लेसमेंट ना। प्लेसमेंट के जस्ट 2 दिन पहले आपको रिवाइज करना होगा, तो उस हिसाब हाँ से बनाया है मैंने, ठीक है? हाँ, तो अगर एकदम जीरो से पढ़ना है तो नेटवर्क एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, कोहोर्ट 0 to 10, वो देखो आप, ठीक है ना। वो एकदम ऐसे जीरो से, चार्ज से स्टार्ट होगा कि बेसिक्स ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, वहां से स्टार्ट होगा। देखो युवराज, प्रॉब्लम नहीं होगा, गैप प्रॉब्लम नहीं होगा। वीएलएसए आप अगर कर रहे हो मास्टर्स, मास्टर्स में गैप का कोई प्रॉब्लम कोई नहीं देखता आपका। उधर आपका वो नॉलेज देखेंगे इंटरव्यू में और परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है? एनआईटीएन, एनआईटीएन नाम है ना, हाँ। तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहेंगे बस, देर आर मोर देन इनफ अपॉर्चुनिटी इन एनालॉग एज वेल। हमेशा एक लाइन याद रखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो लोग तो कहते हाँ, रहेंगे, ठीक है ना। देखो देखिए, एक एक बात सिंपल है, नो डाउट डिजिटल में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कंप्यूटर साइंस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इसी से। लेकिन अभी इसी भी मूव हो रहा है ना, तो कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा बोल नहीं सकता कुछ। एनआईटी सूरतकल, अभी एनआईटी सूरतकल, ओके। डोंट गो फॉर दुर्गापुर, सॉरी टू से, डोंट गो फॉर दुर्गापुर। स्टील स्पीयर, या यू कैन डू दिस, बट आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू पायरेट। फर्स्ट थिंग इज नहीं दैट। कर सकते, कुछ कुछ लोग तो करते हैं यार, पता नहीं कुछ बट लोग वो करते हैं क्या, स्क्रीन मेरे को छोटी आ पता नहीं। जाती है, स्क्रीन छोटी आ जाती है, अच्छा वो मतलब यूज पायरेटेड का इट्स नॉट स्क्रीन छोटा हो यूजेबल, जाता है। अनयूजेबल, या बेसिकली तो अनयूजेबल। मैंने किया ही था ना यार, तो मैं खुद बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तूने किया। जब मैं कॉलेज में था, तो मतलब इतना नेसेसरी नहीं नहीं है, इट्स तो नॉट भाई, नेसेसरी स्टील स्पीयर, अभी ओके, इट अभी इज। एडवांस क्रैक भी तो आ सकता है ऐसा। तब तू कितने हाँ साल हाँ, पहले गया? ठीक है, हाँ हाँ, वो भी है। सर देखो टीआई इतना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछती नहीं है, अगर पूछेगा तो देखो चॉपर्स जो कन्वर्टर्स होते हैं, बक बूस्ट, ये तीन चॉप अच्छे से, इसका वर्किंग अच्छे से समझ लो बस, ठीक है? बाकी स्पेसिफिकली क्या पता पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल के लिए इस बार ले रहे हूँ, पूछता हूँ मैं। या द वन गाय फ्रॉम आईआईटी केजीपी हु आस्क्ड दिस क्वेरी, लाइक आर दे हायरिंग फॉर स्पेसिफिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल दिस ईयर, देख पावर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आर यू तो श्योर अबाउट इट। मेरे को भी पूछना पड़ेगा तेरे से, क्योंकि मेरा भी शायद कुछ आने वाला है कुछ तो कोई अच्छा, है ऐसा बंदा क्या, पहचान में, तो हाँ हाँ, ऐसा तो क्या, मेरे को भी थोड़ा सा चाहिए उसके लिए। मतलब क्या मैं तो, होता। मेरे को पता ही है, वो बेसिकली वो बग बूस्ट तो पूछते हैं, वो तो पता ही है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन शायद कुछ और एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं ना, तो हाँ, देखो एनआईटीएन ऑलरेडी रोड मैप बना हुआ है, अनलॉक वीएलएसए रोड मैप, ओके, जस्ट सर्च दैट। अच्छा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट ईयर से आ रहा है, ओके ओके ओके। तब तो देखो चॉपर सबसे इम्पोर्टेंट है वो वाला चैप्टर, ठीक है? स्टार्ट तो वही से होता है, मेरे को जितना पता है, ठीक है? बाकी मेरे को लगता नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ पूछता है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट वही है, डीसी डीसी कन्वर्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में वही यूज होता है, डीसी डीसी कन्वर्टर। देखो जब आप मास्टर, when you go to masters, automatically things will be given, like if you are going to IIT or NIT, automatically things are there, you just have to follow the curriculum, that's it, just follow the curriculum. गजन फॉर जमल, या IITs, MTech in IITs, MTech in IITs for better placement, ओके। तो Direct मैंने ड्रॉप state लिया like इस बार, one hand. या वन लाइन, सर मैंने तो मैंने ड्रॉप ड्रॉप लिया लिया है। इस बार। मैंने सब्जेक्ट पढ़ी है बट क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो क्या करूं, वापस से पढ़ो यार एकदम आराम से, इसलिए तो आप ड्रॉप लिए हो ना, तो वापस से पढ़ो। ऐसे नहीं कि पहले पढ़ा था कि अब सवाल लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, वापस से पढ़ो आराम से, ठीक है ना। वापस से पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को बढ़िया से एकदम जीरो से स्टार्ट करो। Stuti, you can, but seems like it's a very basic project. For a BTech guy, it's fine, but for masters, I don't think that will work out.
NPTEL courses are how much efficient for gates? Sir, I am doing control system from IITM. IITM का कंट्रोल सिस्टम का कोर्स देखा क्या निश? NPTEL का वो उनका है क्या? शायद मैंने भी उनसे ही पढ़ा है, उनका नाम एक बार सर का देखता हूँ। I have also studied, it's good, but like it's not like totally gate oriented, because they will not solve questions over there, right? The theory is very good, but numerically you have to do on your own, so that is the only thing. Jamal complete playlist is not available on YouTube. I have studied from him. He's a very good teacher. Like your theoretical concepts will be totally clear, right? But you have to additionally solve the numericals. Akansha Verma, how much did you score? How much did you score in AIMT? Yeah, you guys can repeat your query if it was missed. Okay, if you are in the session and the query was missed, then you guys can repeat the query. Okay. It's fine, Akansha. You have to. The 25 still is okay marks. Not like super bad. Like what subjects you have not, like I think you have not attempted COA or Verilog. That was only problem, right? Which should be better, sir? Preparation for. Look, it depends on you actually, Mahapatra. But MTech might take lower time. PSU might take higher time because they have a complete process. It's like a 1-year process. Okay, but for preparing, both of them will take the same time. It's not like that. I completed five subjects partially and got 30 marks with the 7200 rank in GATE 2025. Can I get below? Yeah, you can surely get. No, you need to study. That's it. This is the bottom line. क्या Okay, सैन क्या बोल रहे study हो? now. क्या तो जेई से लेगा क्या? क्या बोल रहे हो? डब्ल्यूबी से नहीं, जेई से लेगा? क्या बोल रहे हो? भाई बंगाली का खत्म हो जाएगा, बंगाली का खत्म हो जाएगा। नहीं हो ही नहीं सकता ऐसे भाई, तुम स्कैम मत करो ऐसे, ठीक है? ऐसे स्कैम मत करो। फिर आपसे कितने For VLSI branch, what is the minimum gate देखो, score for मीम हब ऑलरेडी 650? वीडियो इज देयर। हाँ, yeah, I will answer. Abhi, like you get 650, your job will be done. And IT Surat देखो VLSI worth it to join. मीम हब देयर देख इज अ लो वीडियो, यार. 200 डेज रोड मैप वीडियो है, ठीक है? 200 डेज रोड मैप वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। NIT सूरत कल VLSI वर्थ इट टू ज्वाइन. या देखो सूरत के ईसी के मतलब मैंने रिजल्ट्स देखे थे तो ठीक थे यार, मतलब लेकिन अब मैं क्या बताऊं यार, VLSI अब वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, प्लेसमेंट होगा उस, अगर हो जाएगा तो आपको लगेगा वर्थ इट है, वरना गूगल नहीं है. हार्डवेयर, एक सेकंड, गूगल हार्डवेयर का सीटीसी इतना कब से हो गया भाई? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो यार मैं कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना, NIT सूरत कल VLSI के बारे में. अगर आपके पास और अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब आप कंपेयर करवा सकते हो मेरे को कि इन दोनों में क्या बेटर है, लेकिन फंडामेंटली मैं केवल NIT सूरत VLSI, नॉट सूरत कल. ओके, सूरत कल VLSI इज वेरी गुड. NIT सूरत VLSI पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो आप देख लो. क्या क्या बोल रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, क्या बोल रहे हो आप? काम नहीं है अभी, टाइम पास करने हो क्या आप? कहाँ, क्या क्या चीज? बोल रहे अलग से जेयू का एग्जाम होगा, जेयू जेई, जेयू जेई अलग से एग्जाम होगा, सायन बोल रहा है। NIT भाई यार, आप सही सही सी चीजों पे बात करो यार. 75 लाख गूगल हार्डवेयर, वही तो बोल रहा हूँ मैं, तू देखा नहीं वो वाला मैं? 4 लोगों को ये मिला के नहीं देते वो इतने, ठीक है, 4 लोगों को नहीं नहीं मिला के नहीं नहीं देते. नहीं नहीं, चार लोग गलत बोल रहे हैं, उनका होता है, मेरे को पता है उनका। 20 लाख तो 35 बेस है 30, यार उनका. नहीं 20 लाख बेस है ना. नहीं, सीटीसी बोल रहे हैं ना, सीटीसी 35 36 CTC से यार, ज्यादा। ठीक है. वो भाई ने फेंका है बहुत बुरी तरह से, पूरे बढ़िया तरीके से फेंका उसने 75 लाख वाला. 75 मतलब समझ रहे हो आप? भाई जो एक्सपीरियंस बंदे हो ना, उनको भी उतना मिलता नहीं है, क्या बोल रहे हो? एंड लोग के लिए डेटा कन्वर्टर, स्विच कैपेसिटर सर्किट, PLL वगैरह जरूरत रहेगा क्या? देखो PLL पे प्रोजेक्ट किया है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है. डेटा कन्वर्टर्स रहने दो, ठीक है, नहीं पढ़ा जाएगा. कोई बीटेक एमटेक में पढ़ ही नहीं पाता डेटा कन्वर्टर्स को. स्विच कैपेसिटर सर्किट यार, जो मतलब सिंपल डेटा कन्वर्टर्स में आ गया स्विच कैपेसिटर सर्किट यार, मतलब बेसिकली उसी में पढ़ते हो आप स्विच कैपेसिटर सर्किट. तो मतलब सिंपल वो आरसी के जो स्विच कैपेसिटर होते हैं वो तो आपको आने चाहिए एटलीस्ट.
ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी आपने जो टॉपिक मेंशन किए हैं वो ठीक है। बाकी यार अब जो आपने प्रोजेक्ट किया है, मान लो जहाँ पे पीएलएल वगैरह यूज हुआ हो, तो फिर तो वो पूछेंगे ही। हाँ यार, अब चले गए हो आईएससी आईएपी में, तो चले ही गए हो, बढ़िया ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ना, बाकी सब बढ़िया ही होगा फिर, ठीक है, 2 साल है, मेक इट वर्थ। Quick highlights, just search a video, GATE 2027 roadmap, precision. You'll get that video, just watch that. Okay? हिमांशु हरियाणा से नहीं है, लेकिन उसकी एक्सेंट हरियाणी वाली ही है, ठीक है। पता नहीं भाई क्यों यार लोग मेरे को हरियाणा मानते हैं, मैं हरियाणा से नहीं हूँ यार, लेकिन कैसे यार मेरा एक्सेंट हरियाणवी कैसे हो सकता है? भाई दिल्ली के पास में है ना तू, दिल्ली के पास में तो हो गया ना, हरियाणी दिल्ली पास पास हो गया भाई भाई, क्या बोल इतना भी पास नहीं हूँ दिल्ली के, लेकिन फिर भी रहे? पास ही है भाई, क्या है उसमें। if I do only network signal system control and ADC, and then lastly maths and aptitude, will it be fine? Fine for what? Fine देखो for what? फाइन No. तो नहीं है, फाइन तो नहीं है यार, ठीक है, फाइन तो नहीं हाँ, है, मतलब ठीक है। लेकिन क्लिक हाईलाइट्स, हाँ बता, तू क्या बता रहा yeah, था? like try covering more subjects, no? ट्राई, At या ट्राई least कवरिंग मोर, like roughly for 60 marks you would be able to attempt in these subjects. Poonam Thakur, roughly for 60 marks. quick highlight, complete content is not there on YouTube, and if you are preparing for GATE 2027, I will recommend you take the Titans batch, because you might need the guidance. That's why I recommend everyone, if someone is in second year or first year or third year, they should take the Titans batch, because they don't know how to prepare, so they need the guidance. And Jamal, there is already a video, just search GATE 2027 roadmap, you'll get the video. Yeah, Arun, yeah, you are doing fine. You are doing fine, Arun. Yeah, it is fine. ठीक है, NIT मान लेते हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। Dipti, Doubt like solving, we don't conduct session, but we cover the doubts in the Telegram group. Not in Telegram WhatsApp group, group, sorry. WhatsApp group we have, yeah, we have WhatsApp group, and every 2 weeks we have our mentorship session, guidance, 1:1 guidance. So in the Gmeet we conduct the session, you guys can join and ask your non-technical doubts. Technical doubts are automatically covered in the WhatsApp group. PTP, just search the video GATE 2027 roadmap prefusion, you will get the sequence. Yes, you should start preparing from first year if you want to. Jamal, you can start preparing from first year. Yeah, Kailash Nath, it is good. It is good. The preparation, your preparation is good. Yeah, you can prepare, Jamal. You can prepare from first year as well. Okay, you can prepare. Now start preparing. बोल दिया, हाँ, Yeah, start preparing just now. close the session now. Don't ask any other query. Close the session and start preparing now. Okay. And if you repeat the query, I will have to block you. Sorry to say. Okay. Laplace Laplace transform you will study in signals. Okay, we have not covered in maths, it is covered in signals. देखो शिवा, complete EDC playlist will not come on YouTube. Okay, full course YouTube में नहीं आएगा. या नायडू, या ग्रेट ग्रेट। वीएलएसआई में आगे क्या लेना चाहिए इसको, ये मतलब कंप्लीट करो ना क्वेरी को। वीएलएसआई में आगे क्या लेना चाहिए? वीएलएसआई में आगे स्ट्रेस मिलेगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ, और बाकी आगे पता देख नहीं रहे होगा हो क्या लेना देख रहे हो इधर चाहिए। क्या हालत स्ट्रेस है मेरे जरूर मुंह मिलेगा, में? क्या देख रहे वीएलएसआई हो में तुम? स्ट्रेस जरूर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी पूरा करो ना आप क्वेरी को कि क्या लेना चाहिए। How to manage, देखो अभी तो इंटर्नशिप में फोकस दो, मैं यही बोलूंगा। ह्यूमन, अगर आप इंटर्नशिप करो तो, अगर इट्स लाइक ए कंपनी दैट यू वांट टू डू फुल टाइम जॉब, सो फोकस ऑन दैट। देखो पीटीपी ऑलरेडी कर दिया ना सब्जेक्ट, गेट 2027 रोड मैप, सर्च, यू जस्ट सर्च दैट वीडियो, गेट 2027 रोड मैप प्रिसीजन, एवरीथिंग यू विल गेट। Yeah, you get into any college, but to study there. Once you get into there, then study for gate examination. Yeah, That's the prepare only for gate option you will exam. have. Yeah, like you get the idea which college has lower like strictness like attendance and criteria, so you can enroll in that college.
I think Nanda already in that video itself he has told like how many hours per day he should be studying. I think it was 7 to 8 hours. 7 to 8 hours he should be studying per day. You can revise. You can revise through notes. You can revise through notes, Nanda. You can revise the notes. VLSI में किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अगर एक चूज करना है तो पीडी, ठीक है, फिजिकल डिजाइन। अगर एक सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए तो पीडी होना चाहिए। बाकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है यार। Interest, DFT what's your interest? It really depends on interest. DV also has good opportunities. It depends on interest. I have started a 200 days gate preparation plan for EC. How many hours should बोल I दिया allot? 7 to 8 hours. वीडियो में Okay. था वैसे बोला था, बोल दिया। EDC course will come. Currently it is not present. It will come later. प्रकाश शर्मा, देखो जो भी हो गया है वो हो गया है। आप बार बार उस बारे में सोचोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, ओवर थिंकिंग कम करने का मैं आपको एक वे बताता हूँ सबको। आई विल टेल टू एवरीवन, लाइक लेट्स जस्ट से आई एम ओवर थिंकिंग एनीथिंग, आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट एक्वायरी एक्स। ओके, देयर इज अ डाउट एक्स इन माय माइंड, आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट इट। So what I will do, I will write the solution on a page. On a page, I will write the solution of that particular doubt, that I am having a doubt regarding X. So that X, regarding that doubt, I will have an answer as well. So I will write down that answer. Next time, whenever I overthink, I will go back to that page and I will read it. Okay, you might be overthinking, but you cannot overthink more than me. Okay, so I also overthink a lot. एक्स मतलब वो वाला एक्स का बात नहीं बोल रहा, वो जस्ट नॉर्मल एक्स Yeah. का बात बोल रहा, ठीक है, वो ईएक्स का बात नहीं बोल रहा, ठीक है, X वो means like नहीं है। query X, X, Y, variable X. Okay. So whatever you are overthinking, no, just you cannot do anything about overthinking, right? If I tell you meditate, all these things, you will not do anything. So this is the only option which I used, that if I am having any doubt, I will write down the answer of that doubt, and then again I will go to the page, again I will read it, and then I will have to stop overthinking. This is the thing, and just Arun, try concentrating. Yeah, Anish, you can tell now. Arun, just search the video how to prepare notes, how to study prepare notes, Prefusion, right? You don't make your own notes. Just search that video. You study from the printable notes. And human, if you feel like you will not continue there, so you focus on gate preparation. You focus less on internship, focus more on gate preparation. X. भाई तो अब तो खुद को, अब हो गया जो हो गया हो गया, ठीक है। अब तो क्या यार, क्या बोल दिया तूने, फिर से दुख हो गया बेचारा। देखो Arun, personally I prefer whatever I have made, because if I prepare from hand, like those things, I don't feel that will be much beneficial to you, like according to me. Okay. How can I prepare for gate? Where to start, sir? Like, how would you expect me to answer these queries in a section? No? How you can prepare for gate? You go on YouTube and type how to prepare for gate, complete roadmap. You will surely get a video. Only thing, how to prepare for gate by studying. What is the strategy? Study. How to overcome fear? Study. How to overcome this thing, that thing? Study. Only answer to all the queries. Only one answer is there. Study. That's it. Okay. How to forget your ex? Study. Study. That's it. अगर कोई चीज हट करती है, पढ़ने बैठ जाओ, काम करते रहो, ठीक है। किल योर फीलिंग्स, बी ए मैन, किल योर फीलिंग्स। भाई ये क्या भाई, ये वीडियो तो बस गेट, यही होती है बॉटम लाइन। वो गेट का है, वो वाले नहीं कि यार फीलिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। बात खत्म भाई, गेट बात गेट का यहीं पे वीडियो खत्म। है, कैसा बोल रहा है, गेट का वीडियो है यार, क्या कहाँ पे आ गए अपने, गेट का वीडियो है। यही बता रहा हूँ कि टफ बन जाओ, यू नीड टू बी टफ, जस्ट बी ए टफ। ऐसे ही आपने ईसी इंजीनियरिंग चूज कर ली तो पहले ही आप टफ हो गए हो। ईसी इलेक्ट्रिकल चूज कर सीएस चूज करते तो फिर मतलब ईसीएस चूज करते फिर भी मान लेता मैं तो सीएस का। Whatever, if companies come, you can start preparing for placements. If they don't come, you start preparing for gate.
EMFT we for now it's free, अभी पढ़ लो, for now it's free, अभी पढ़ लो, ठीक है? Later we cannot comment for later, for now it's free. मैथ्स के लिए क्या कौन सा चैनल, पता ही नहीं यार, नहीं पता यार मैथ्स में मतलब खुद से ही हो जाता है मोस्टली। अगर आपकी जेई मतलब जेई खराब थी तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, जेई अच्छी थी तो मैथ्स हो जाता है। नहीं मतलब ये मेरे ख्याल से गेट मैथ्स की बात कर रहे हैं, ये हाँ गेट मैं समझ गया, मैथमेटिक्स। वो मैं समझ गया क्या बोलना चाहता है, मतलब अब उसको फ्री में पढ़ना है ना गेट मैथ्स के लिए, मेरे को पता नहीं है ना उतना चैनल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से भी You पढ़ you सकते taught हो। like this year, not complete. We haven't given the complete Linear mathematics only. algebra So is like there, calculus part is there, probability part, bit of probability is there, bit of linear algebra is there. Sorry, linear algebra completely is there, calculus is there, bit calculus, and complete vector calculus is there. So those things you can cover from our channel. Okay, there is a playlist. Those things you can cover. हाँ, ये नेटवर्क ईएमएफटी तो फ्री रहेगा, मतलब ईएमएफटी देखते हैं कब तक फ्री रहता है, लेकिन ठीक है काफी लंबे टाइम तक अभी तक तो फ्री रहेगा। बट यार ईएमएफटी में ढंग से रिस्पॉन्स आया नहीं यार, अब मैं क्या करूँ, तो फिर मेरे को प्राइवेट करना पड़ेगा, जैसे ही प्राइवेट कर दूंगा रिस्पॉन्स बढ़िया आ जाएगा, फिर मैं वापस पेड कोर्स पब्लिक कर दूंगा, ऑब्वियस है ये तो। अपना ही पेड कोर्स है ना आनंद, अपना ही पेड कोर्स है, यू कैन परचेज और पेड कोर्स कंप्लीट है, वहां पे कर सकते हो परचेज। इंजीनियरिंग मैथ्स का पेड कोर्स है वो, गेट कंप्लीट मैथमेटिक्स, ही माइट बी आस्किंग फॉर मैथमेटिक्स इन गेट, सॉरी गेट इन मैथमेटिक्स। ओ ओ ओके ओके। Are you talking about engineering mathematics or gate in mathematics? Please be specific. Okay. सर वेट अ सेकंड। Yeah, Arun, you can go with two subjects in parallel. Okay, you can go with two subjects in parallel. Yeah, you guys can repeat your query if it is not being answered. You guys can repeat the query. Okay. If it is not being answered, you can repeat the query. नथिंग उतना तो हर्ट नहीं करेगा, बट ट्राई टू फोकस अ बिट, ट्राई टू कीप इट 7+, ओके, डोंट गो बिलो 7+, ट्राई टू कीप इट 7+. Look, the bottom line is if you are getting more than 6 hours to study, if you are studying more than 6 hours, then you can take two subjects in parallel. If you are studying for 3 hours or 2 hours, then you take only one subject. Then you can take only one subject for gate preparation. So it depends on the time that you are getting. Okay. Yeah, alpha, beta, gamma, it is possible. It is possible. Okay, it is possible. नहीं 6.5 इतना नहीं दिक्कत करेगा, नथिंग नथिंग इतना नहीं प्रॉब्लम करेगा 7+, 6.5। मैं बोला 7+ कर रहा हूँ उसको, एटलीस्ट ट्राई करो 7+ के ऊपर रखना, वो सेफ साइड, ठीक है। कंप्लीट ही हो गया है, कंप्लीट ही हो गया बीटेक। हो जाएगा, कंप्लीट हो अब तो कुछ नहीं कर सकता ना यार, लेकिन इतना नहीं गया। हर्ट करेगा, ठीक है, इतना हर्ट नहीं करेगा। मतलब थोड़ा सा तो पढ़ लेते यार मीटिंग में, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मतलब तो भाई जैसे वो आपका वाले आपके पास लॉकडाउन था, लॉकडाउन। ईएससी ईसी के एक्स्ट्रा टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक एडवांस एनालॉग, एडवांस कम्युनिकेशन में कुछ रिसोर्स बता दीजिए। देखो यूट्यूब पे तो कुछ नहीं मिलेगा यार, ठीक है, यूट्यूब पे तो कुछ नहीं मिलना। एडवांस एडवांस एनालॉग तो है ही नहीं यार, एडवांस एनालॉग कहाँ है ईसी में, एडवांस भी वो है, एडवांस वीएलएसआई है, ठीक है, एडवांस एनालॉग नहीं है। एडवांस एनालॉग होता तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। तो एडवांस भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस वीएलएसआई नाम है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है उसका। तो उसमें एनालॉग का कुछ नहीं है, उसमें वीएलएसआई का सर्किट, वीएलएसआई का डिवाइसेस वाला पार्ट है, ठीक है। और एडवांस कम्युनिकेशन भी जो पढ़ाते हैं उनसे पढ़ लो यार, मतलब यूट्यूब पे तो कुछ अवेलेबल नहीं है इनका, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी ईएससी के लिए मैं ये कोचिंग रिकमेंड करता हूँ, मेडीजी। ईएससी जिसको करना होता है वो मेडीजी की तरफ जा सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। I've just completed my first year electronics. I'll be getting. So you can take the Titans batch of Gate 197. Okay. How should you prepare? That we will talk in the session. Okay. We will talk. We will conduct a session. There we will talk. What should I focus on while listening to Gate lecture? Should I take a short notes during the lecture or after completing it? During the lecture only. Whatever that you are writing down, you do it during the lecture only. अरुण कहाँ से पढ़ रहे हो, ये मेरे को बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मेरे को आप बताओ कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू बन रहे हो। तो ये चीज़ एक कोर्स में होती है, मेरे को पता है कौन से कोर्स में होती है ये, लेकिन आप मेरे को बताओ कि आप
कोर्स का नाम बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो चीज आपके साथ हुई है ना, वो हमारे साथ भी हुई भी है, तो ये किसी कोर्स में होती है। फिर दिक्कत होगी कि यू उसमें फाइनल एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाती है। देखो देखो, एक छोटी सी बात होती है कि कोर्स का कंटेंट जो डिजाइन होता है ना, कोर्स का कंटेंट जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स ये करते हैं कि पीवाईक्यू से अपना कोर्स का कंटेंट डिजाइन करते हैं। तो आप वहां से पढ़ोगे, आपको लगेगा कि यार पीवाईक्यू तो सारे बन गए, बट जो एफआईक्यू है, जो आने वाला एग्जाम में, वो नहीं बनता। कभी कभी ये चीज हो जाती है, ठीक है ना, कभी कभी होती है ये चीज। मैं किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, मैं ऐसे बस मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो केवल पीवाईक्यू से आप अपनी परफॉर्मेंस कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते हो कि देखो मेरे से पीवाईक्यू बन रहा है, इसका मतलब मैं एग्जाम फोड़ दूंगा, नहीं होगा कभी। आप टेस्ट सीरीज देके देखो, कोई भी कोचिंग की एक बार टेस्ट सीरीज उठाओ। जैसे आपने नेटवर्क कर लिया है, तो आप नेटवर्क के अपने पीवाईक्यू भी कर लिए हैं, अब आप नेटवर्क की टेस्ट सीरीज उठाओ और देखो कि अब आप सवाल बना पा रहे हो क्या उसमें। अगर बना पा रहे हो ना, तो हाँ ठीक है, सब्जेक्ट चल रहा है, वरना नहीं चल रहा। यही छोटी सी लाइन है, यही बॉटम लाइन होती है, यही रियलिटी है, ठीक है। इसलिए टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। Sir, I have two problems. My sleep cycle is bad. I sleep late, not wake up early. Mostly I oversleep. I am bad at problem solving. It takes sometimes more than 30 minutes. तो देखो, पहली क्वेरी का तो मैं आंसर करने लायक हूँ नहीं, ठीक है। क्या कौन सा क्या है? You sleep हाँ सर, late and don't wake up early. Mostly you oversleep. Yeah. तो इसका तो you're asking you're asking the absolutely worst person, absolutely the worst person. ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी मैं ओवरस्लीप तो नहीं करता मैं लेट सो के नहीं, जल्दी उठ जाता हूँ। मैं बता देता हूँ। देखो जय, इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम राइट, देखो फॉलो करना पड़ेगा ना। डेली ट्राई टू वेक अप एट द सेम टाइम, 9 AM 9:30 AM एंड fall asleep at the same time 1 AM, whatever is your timing. Don't change that. You can change that by 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, but don't overchange it. Okay. And बाकी वाले no one is bad at problem solving, okay? No one is bad at problem solving. It takes time. You keep on solving the problem. Like I started solving the questions in January. Within July, I will be very comfortable with the problem solving. So it takes time. It is a slow process. Okay. So don't feel that sir, I'm not good at problem solving. It is taking 30 minutes. Even if it is taking 60 minutes, then also it is fine. Even if it is taking 90 minutes, then also it is fine. So don't worry about all these things. Okay. Sir, I always confused to choose faculty for subject. First, I will select one, watch his classes for 2, 3 topics. Again, I start with another lecture. Don't go like that. No, whatever the faculty you have chosen, just go with that. Complete the full subject from that particular faculty only. From whoever you are studying from, just study from him only. The full subject. Okay, full subject you study from him only. And once you are done with the subject, after that you can refer to other resource. But until you have completed the subject, don't look for any other resource. Okay. Lectures are in English. Our lectures are in English. I am गेट always well. मैथमेटिक्स, देखो गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स राइट, फॉर ECEE for ECEE GATE engineering mathematics is complete in our paid course. Okay, Anand. Yeah. So Arun, your preparation is going very, very good then. Okay. Don't worry about that. It is going very good. Okay. 75% is very, very, very good accuracy. So sequential circuit is not clear in. I saw your digital content which is top notch. I want to buy. No, only sequential circuit will not be available because this is the only part which I did not teach in YouTube, right? So only sequential circuit will not be available. It is of 1.3K, and after the promo code, it will be of roughly around 1.1K. So I don't think it is too much. 1,100, I don't think it is too much. So only for digital, only for sequential circuits, how I can make the paid course, no? So that will not be possible. And if you mentioned the name of the coaching, so there are good teachers as well there. You can study from them. Okay, so there is a very good teacher of digital circuits there. You can study from him. Sequential part you can study from him. And Aniket, yes, you can FSMST start. you can study from me. Yeah. Aniket, you can start from first year. Yes, just search the video GATE 2027 roadmap refusion. You can watch that video and start your preparation. Can I do 3 subjects in a day and how? Three subjects I will not recommend. I will recommend 2 subjects only. If it's an aptitude or if it's a light subject, then you can do 3. But I will not currently. I will not recommend 3 subjects. 2 subjects is good.
दीपक यार मतलब आप बताओ क्यों नहीं बैठना चाहते कैंपस प्लेसमेंट में? बैठना चाहिए ना। देखो आईएसआरओ का प्रिपेयर कर लो, बट यार वही है, वैकेंसी वैकेंसी तो आई है। एग्जाम कब होगा, कब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कब फाइनल आपकी लिस्ट आएगी और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है आईएसआरओ का। ठीक है ना? तो मतलब बैठो ना कैंपस प्लेसमेंट के लिए, बैठो। आपके पास कितनी बढ़िया ब्रांच है, आईईसी है, आईआईटी दिल्ली में है। बैठो यार आराम से। एनटीपीसी क्यों जाना है? नहीं जाना है एनटीपीसी, ठीक है ना? मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि क्यों नहीं नहीं जाना जाना है। भाई? क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना टीबीसी? क्यों नहीं जाना भाई? क्यों नहीं जाना? ठीक है भाई। ठीक है भाई, नहीं सर जाएंगे एनटीपीसी पे। और उसकी मर्जी, उसको ठीक है ना जाने यार, दो। बैठो। आपका मन है पीएसयू जाने का तो चले जाओ, लेकिन मेरा तो यही है यार कहना कि बैठो प्लेसमेंट में, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाँ मतलब प्लेसमेंट में तो बैठ ही जाओ, मतलब पीछे जाने तो जाओ, बैठ ही जाओ प्लेसमेंट में, तो क्या है। Joy, there is no property. There are no property in Fourier and Laplace transform. I don't think there is any property. Okay, you study at least Fourier series from YouTube. Okay, at least Fourier series you try studying whatever that I have taught, and you realize that there is no property in signal system. Okay, and I have already made a video how to study signal system. You can watch that. If you can, you can obviously. ऐसा बेटा you can. If you want to do, you can. Okay. Now you're asking how to manage. I told you like you do 2 subjects, but you want to do 3 subjects, and then you're asking me how to manage. How will I say how to manage? अभी मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से कभी बात नहीं करता। ये फर्स्ट ईयर का अल्फा है? बीटा फर्स्ट ईयर फर्स्ट के ईयर का बच्चे है? ही कहते हैं यार मेरे को। फर्स्ट ईयर का कैसे? हाउ व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग 3 subjects in parallel if you are in first year? That is my first question. It's okay यार Aniket, it's fine, no problem. You the low level, yeah, you can join state level state level government soccer. That is a better option, and you start preparing for gate. यार हेल्थ का फोकस ऑन योर हेल्थ, your students are worried about you. प्रॉपर स्लीप रे यार, क्या कर रहा है? प्रॉपर स्लिप तो है ही भाई। अरे पास आउट है भाई, क्या बोल रहे हैं, पास आउट है वो। And how are you thinking that I am dedicated enough? I don't feel I am dedicated enough. I delivered signal system in 3 months. How you नहीं नहीं can नहीं say नहीं भाई, dedicated? सिग्नल बहुत बड़ा होता है यार, सिग्नल बहुत बड़ा होता है, मजाक थोड़ी है But सिग्नल। I should have delivered it way before. This is what I think. नो नो नो, नहीं भाई, वो करने में टाइम लगता है भाई, इतना आसान नहीं है। स्टार्ट Aniket, I just told you, right? I just told you, search the video, Gate 2027 roadmap, Prep Fusion. The video will come. Just I have told you, right? You study from us, Saikat, study from our playlist, network theory. It will not be a difficult subject to master. Okay. Already dropper, then go for NIT. Go for NIT. Okay? Go for NIT. How to practice MSQ? Like, there is nothing different to practice for MSQ, no? There is nothing different, right? In the test series as well, there will be more than enough question. I don't think we have framed less question from MSQ, right? A lot of No, MS questions I also have there. framed MSQ only. Yeah, MS yeah, also right. there. MS. I guess like from 10 question, like at least 30% of the questions are MSQ in our test series at least. We are framing MSQ only. Okay. So you cannot say test series in the test series MSQ are very less. I don't think they are very less. You might be talking about some other test series, but in our test series there are more than enough MSQ. Look, Rahul, if you have decided, then yeah, what can you say? You can go, but I will say also, control also you study, right? Control is also a high weightage subject. It's easy subject. Control you study. Students, performance, area optimization techniques. Low power VLSI AI. For AI, how much depth required for AI? AI is not required. Yeah, Deepak, what I देखो, would say is that you, I would answer नहीं, तू too बताता much. तू, हाँ तू बताता हाँ। Yeah, I would suggest that you once you get into the corporate, after that, when you are in the corporate, you prepare for ISRO. Then you can switch. Like you are already doing your masters, I would not recommend dropping it.
If you feel like that, sir, I can go to NTPC and then there I can prepare. So you can choose this option as well. You go to NTPC and when you are working in NTPC, at that time you can prepare for ISRO. So this is something you can do. But let me tell you one thing, like working in ISRO is way more difficult than working in any industry. Okay, working in ISRO is way more difficult than working in any corporate organization. Okay, so this is what I wanted to tell. Okay, I guess we can end the session. Right. Campus placement, industrial electronics for written test, technical interview, which topics are more news updates. These things we have made the videos like 10 times. Which all topics are important? Okay, everything is important. What all things Digital are VLSI roadmap, you just search digital VLSI roadmap. Okay. शानू यादव भाई, कॉलेज में टैक्स आने वाली है बीटेक के लिए, क्या और कैसे प्रिपेयर करूं? तो अब थोड़ी ना प्रिपेयर करोगे, ठीक है? अब तो आ गई, वो प्रिपेयर करना होता तो आपने कर लिया होता अभी तक, अब तो आ गई ना, अब तो 20 दिन में आ जाएगी। तो क्या प्रिपेयर करना है? आपने एक बार यूट्यूब पे सर्च किया होता ना, तो अभी तक आपको मिल गई होती, 10 वीडियो मिल गई होती। आपने एक बार 10 बार लिखी, एनालॉग VLSI रोडमैप सर्च मारो, आपने एक बार यहाँ पे 10 बार लिखी, एक बार आप यूट्यूब में लिख देते, आपको सब कुछ मिल जाता, सब कुछ एकदम लाइन टू लाइन, कहाँ से क्या पढ़ना है सब कुछ मिल जाता। पढ़ने की थी बस, इतना सा, केवल एक चीज होती है, पढ़ना, बस वही क्वेरी होती है सबकी, पढ़ें कैसे? पढ़ना है बैठ के, ऐसे पढ़ाई होती है, और कैसे नहीं पढ़ाई होती है, बस इतना ही है। बैठ के तो नहीं होता भाई, फोकस नहीं होता। खड़े होकर कुछ पढ़ते हैं अपने, गेट रेडी विद मी, तो वो तो खड़े होके एकदम करते हैं भाई, वो उनका स्टैंडिंग सेटअप है, उनका सेटअप देखा हूं मैं, उनका स्टैंडिंग है। On a daily basis with studying new subject, how to revise all completed subject. Jay, either you can practice the questions, or just study your notes, revise your notes, or attempt the test series, right? Subject by test series. Okay. So I guess that's enough. We're ending the session now. Yeah, we will try to come live within next 20 days. Okay. Yeah. Okay then. Yeah. Thank you.